सो अब हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जी। Question number 1, a bucket is taken to the bottom of the well. Does the bucket possess any potential energy? Explain. तो जब हम बिलो टू द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करते हैं तो क्या ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मूव करवा रहे होते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है या नहीं होती। तो देखिए जी, हम उनको मूव करवा रहे हैं तो हम उनके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन कर रहे हैं। वो वर्क डन उनके पास अगर वो मूव कर रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। और जैसे ही वो जाकर रेस्ट पे जिस पॉइंट पे भी जाके रेस्ट पे होंगे उस पॉइंट पे वो सारी काइनेटिक एनर्जी उनकी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब इस केस में जब वो वाटर सरफेस के साथ जाकर टकराएगी बकेट तो उसे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। वो वर्क डन वो तभी कर सकती है बकेट जब उसके पास कुछ एनर्जी होगी। देखिए, एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क है ना। तो वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी जो उसके ऊपर वर्क डन किया होगा उसके पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। और सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम डाउन टू द अर्थ मूव कर रहे हैं तो हम नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो उसके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यस, bucket possesses potential energy. When a bucket is taken to the bottom of a well because some work is done against the upthrust of water, this work done is stored in the form of potential energy in the bucket. We can also say that the bucket possesses some negative potential energy with reference to the ground level. Question number 2. When an arrow is shot from its bow, it has kinetic energy. From where does it get the kinetic energy? तो उसके पास जो इलास्टिक जो स्टोर्ड होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। To stretch the string from of the bow, work is done on it. This work done is stored in the form of elastic potential energy. When the string is released, the elastic potential energy is converted into the kinetic energy and makes it move in the forward direction. Question number 3 is, does a hydrogen filled balloon possesses any potential energy? Explain. तो एक हाइड्रोजन फिल्ड बैलून जो है क्या उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है या नहीं, ये हमने एक्सप्लेन करना है जी। द हाइड्रोजन फिल्ड बैलून इज लेस डेंसर देन एयर, सो व्हेन इट इज रिलीज्ड इन द एयर इट moves in the upward direction against the gravitational field due to the upthrust of the air. This work done against the gravitational field will be stored in the form of the potential energy in the balloon. Is kinetic energy a vector quantity? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं कि जी ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर वेलोसिटी का स्क्वायर इन्वॉल्व है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते। वी हैव टू ऑब्जर्व इट केयरफुली। एनर्जी possessed by a body due to its motion is called the kinetic energy, and we have the relation kinetic energy is equals to 1 by 2 mv square. As we know that the work done on an object will appear as an energy on an object, and work is a scalar quantity and so is the energy. So thus it is concluded that the kinetic energy is a scalar quantity. अब यहाँ पर सिंपली ये भी देख सकते हैं ना कि वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है ना, तो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है विद इटसेल्फ। तो अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें ना दो वेक्टर्स का तो उसका आंसर हमें स्केलर मिलता है। मैथ तो है ही स्केलर और 1 by 2 एक नंबर है तो यहाँ पर ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है वो स्केलर बन जाएगी। और इन जनरल एनर्जी होती भी स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक है जी, एनर्जी वेक्टर नहीं होती। Question number 5. What happens to the kinetic energy of a bullet when it penetrates into a target? As we know that the kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion and its relation is equals to half mv square. So, when the bullet is penetrating into the bag of sand, its velocity decreasing
due to the resistive forces applied by the sand. So we can say that the some amount of kinetic energy is used to overcome the resistive force, while the other part is converted into the sound energy and heat energy. Question number 6. Does the tension in the string of a swinging pendulum do any work? Explain. No. The tension in the string of a swinging pendulum does no work. As we know that work is defined as the work done is equals to F dot D, or F W is equals to F D cos theta. As in case of a pendulum, the tension in the string and the displacement are always perpendicular to each other. If we draw here the diagram of it, we simply know that the tension and the displacement are always perpendicular to each other. So there will be 90-degree angle between these two physical quantities, and the work done in this case will be equals to 0, since we know that the cos 90 degree is equals to 0. So when the pendulum is swinging, the tension in the string acting upward and the displacement is along the direction to the tension of the string, and hence no work will be done. Question number 7. A meteor when enters into the Earth's atmosphere burns. What happens to its energy? A meteor has both potential and kinetic energies before entering the atmosphere of the Earth. As it falls towards the surface of the Earth, frictional heating occurs, caused by the collision with air particles in the atmosphere. Hence, the energy of the meteor is converted into heat and light energy. तो बेसिकली उसकी जो वर्क डन अगेंस्ट द डस्ट पार्टिकल एंड द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है, और उसी की वजह से बर्निंग प्रोसेस अकर होता है, जिसकी वजह से लाइट इमिट होती है. Question number 8. What type of energy is stored in the spring of a watch? The energy stored in the spring of a watch is elastic potential energy. This stored potential energy is used to run the watch as it converts this potential energy into the rotational kinetic energy. Question number 9. A man drops a cup from a certain height which breaks into pieces. What energy changes are involved? When the cup is in the hand of a man, it has gravitational potential energy. When the cup is dropped, this potential energy is converted into the kinetic energy. And when this cup strikes the ground, this kinetic energy is converted into sound energy, heat energy, and the work in breaking the cup into the pieces. Question number 10. A man rowing boat upstream is at rest with respect to the shore. Is he doing any work? So basically अगर वो शोर के हिसाब से रेस्ट के ऊपर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. सो इन केस ऑफ वर्क डन वी हैव एफ डॉट डी. तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो इट मीन्स वर्क डन ज़ीरो है. नो, द मैन does not do any work because we know that the work done is defined as the product of force and displacement. Since the applied force by the man on the board produces no displacement, therefore F dot 0 will be equals to 0. So work done is equals to 0. Hence no work is done by the man keeping the boat at rest with respect to the shore. Question number 11. Why energy savers are used instead of normal bulbs? Answer is due to the efficient
electrical circuit energy savers consume less energy as compared to the normal bulbs. नॉर्मल बल्ब जो हमारे पास होते हैं ना जी, फिलामेंट वगैरह, उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, फिर डी एक्साइटेशन की वजह से वो फिलामेंट ग्लो करता है, काफ़ी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इन कंपेयर टू एनर्जी सेवर्स इमेंस अमाउंट हम कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट की एफिशिएंसी की वजह से भी ये जो एनर्जी सेवर्स होते हैं ये फेवरेबल होते हैं। एनर्जी सेवर्स प्रोड्यूसेस लेस हीट देन नॉर्मल बल्ब्स। Light of energy savers has high power and is of intense as well. Energy savers are more sustainable than the normal bulbs.